इसी तरह सीटो के बाद उसी ही तर्ज पे एक और तंजीम का नाम आता है जिसका नाम है सेंटो। सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम बगदाद पैक्ट है क्योंकि ये बगदाद में बनाया गया और उसका हेडक्वार्टर भी बगदाद में बनाया गया। So CENTO was formed in 1955 and the member countries were mostly Muslims. They were basically belonging to the Asia. They were Iran, Iraq, Pakistan, Turkey or UK. So these were the 5 members that joined and that formed CENTO in 1955. इसमें UK जो है वो यूरोपियन कंट्री है और बाकी जो 4 हैं वो एशियन कंट्री है। In 1958, United States joined the military committee of the alliance because CENTO was again a military alliance. It was for the defense purpose and US was very interested in becoming a part of such organization which are for defense, which are as a military alliance so that it can work against Cold War. It can help in fighting against communism. इसीलिए US ने भी 1958 में it joined CENTO. It is again one of the least successful alliance of the Cold War. तो जिस तरह CETO was an unsuccessful alliance, it is again one of the least successful alliance of the Cold War. CENTO committed the nation to mutual cooperation and protection as well as non-intervention in each other's internal affairs. कि एक दूसरे के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखलंदाजी नहीं करनी, लेकिन इसके अलावा it ensured that there would be mutual cooperation and protection of the states, which means it would again go for collective security. कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री को किसी हेल्प की ज़रूरत होगी in case of an attack, so all the members would be helping that state in overcoming that threat. But the threat was again mostly for communism. So its goal was to protect against Soviet Union communist threat. जो मेन पर्पस इसका जो बना था वो सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिज्म से ख़तरात हैं या वहाँ से कोई थ्रेट मिलते हैं तो उसके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि जो सोवियत यूनियन है it could not attack these countries and these countries are protected. So Pakistan was again one of its members. Unlike NATO, CENTO did not have a unified military command, nor were many US or UK military bases established in member countries. तो NATO तो एक मजबूत इदारा है, उसके तो काफ़ी बेसिस हैं, काफ़ी फंडिंग्स हैं, उसमें जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और यहाँ पे these countries that formed, they were weak, they were not very much strong countries at that time and therefore they were looking for their defense. And these countries, because they were weak, they could not have a unified military command and not many military bases were established. US was not interested in establishing bases in all these countries. It only established a few bases only for its strategic importance and otherwise the main function of this security was neglected in this CENTO. The Middle East and South Asia become extremely volatile areas during the 1960s, while the ongoing Arab-Israel conflict and the Indo-Pakistan war. तो ये जो 1960 का दौर है इसमें ये जो एशिया का रीजन है ये काफ़ी वोलेटाइल रहा है, काफ़ी बेचैनी यहाँ पे रही है, काफ़ी इस वक्त यहाँ पे कशीदगी रही है। कशीदगी मिडिल ईस्ट में भी थी जहाँ पे अरब और इसराइल कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इसराइल और अरब के बीच में जो कशीदगी आ रही हैं जिसकी वजह से जंग वगैरह हो रही है। इसी तरह बरसगीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुई है विच वॉज अकर्ड इन द ईयर 1965। तो ये जो वॉर्स हैं इसकी वजह से ये जो रीजन है ये काफ़ी गैर महफूज रहा है, काफ़ी बेचैनी की फ़िज़ा यहाँ पे रही है, काफ़ी कशीदगी रही है। तो उस वक्त जो सेंटो है अगेन इट डिड नॉट हेल्प दीज कंट्रीज, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंस। हालांकि एक जगह पे ईरान, इराक, टर्की वगैरह इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है इन इट्स वॉर, बट सेंटो वॉज नॉट हैविंग एनी रोल इन दीज कन्फ्लिक्ट्स
or any assistance during these conflicts, because CENTO purpose was again to fight against communism, to struggle against communism, and not to provide aid in case of any other dispute. यहाँ पे आपको CENTO का मोनो नजर आ रहा है, और इसी के साथ you can see that the red represents the members of the CENTO organization. तो एक आपको यूके नजर आ रहा है विच इज रेड, टर्की है, देन इट्स इराक, ईरान एंड पाकिस्तान. सो बाकी तो आपको नजर आ रहा है कि दे आर फॉर्मिंग अ चेन, वेल यूके इज far away, it's a new continent, it's another continent. So these were the members of the CENTO organization. So as I was discussing that CENTO was unwilling to deeply involved in these disputes, in these Arab disputes and the dispute between Pakistan and India. So Pakistan tried unsuccessfully to get assistance in its war with India through CENTO, but this was rejected under the idea that CENTO was aimed at containing the USSR and not India. तो पाकिस्तान ने जिस तरह सीटों से रिक्वेस्ट की थी for military assistance and aid, इसी तरह पाकिस्तान also tried and made request to CENTO to provide it assistance, to provide it support, but again CENTO did not respond to that request. CENTO again, the response was that the purpose of CENTO is to fight against communism and to contain communism and not to give aid against India. After Iraq revolution in 1958, it left the treaty. तो इराक में जो revolution आया 1958 में, so because of that revolution, Iraq finally left CENTO. तो वो CENTO की रुकनीयत से दस्तबरदार हुआ. अब इराक के जाने से इसका नाम भी चेंज होगा, क्योंकि जो बगदाद पैक्ट है इसका पहला नाम मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था. इट वॉज कॉल्ड मीटो, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन बगदाद के जाने के बाद इसका नाम रख दिया गया CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो नाम है CENTO, ये इराक के जाने के बाद दिया गया है. इसका जो अपना ओरिजिनल नाम है वो बगदाद पैक्ट है या मीटो है. लेकिन 3 साल बाद इसके बनने के बाद जब इराक दस्तबरदार हुआ, इराक क्विट CENTO, then it was named as CENTO. CENTO moved its headquarters to Turkey in 1958. अब पहले इसका हेडक्वार्टर बगदाद में था, लेकिन जब CENTO बन गया और इराक इससे दस्तबरदार हुआ, तो फिर उसके बाद जो इसका कैपिटल, जो इसका हेडक्वार्टर था, it was also moved from Baghdad to Turkey. As a result, Soviet Union charged that by joining the Baghdad Pact, Pakistan had become a member of an aggressive Western alliance, and it responded by radically altering its stand on Kashmir, as it now agreed with India that Kashmir belonged to them. तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान ने अपने लिए ही दर्द से ढूंढ लिया है, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है, which means that Pakistan is now struggling against the existence of communism. It is struggling against Russia. Therefore, Russia was not now friendly towards Pakistan. It did not look at Pakistan as a friend. Rather, it started looking at Pakistan as an enemy country. क्योंकि पाकिस्तान यूएस के साथ कम्युनिज्म के खिलाफ जो तंजीमें हैं उसका मेंबर बन रहा है. So it charged Pakistan as an enemy country, and also it changed its stand on Kashmir. इसने कश्मीर पे जो इसका एक स्टैंड है वो चेंज कर दिया और इंडिया के साथ शामिल हो गया, और साथ में ये उनका स्टैंड रहा कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, जो कश्मीर का हिस्सा है, it belonged to India. And as a result, Pakistan, we can see that the foreign policy of Pakistan was suffered because of becoming members of these kind of alliances. Near the end, it became clear to CENTO members that the organization was better for economic and technical cooperation than it was a military alliance. तो जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं कि मिलिट्री सतह पे तो कोई इसका फायदा नहीं है. There is no advantage of CENTO as a military organization.
हाँ, उसके कुछ इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन जो बीच में हो रही है मेंबर स्टेट्स के बीच में, वहाँ कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अलावा एज अ मिलिट्री, एज अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ यूजलेस. इट डजंट हैव दैट पर्टिकुलर पर्पस. ओनली इकोनॉमिक लेवल पे एंड टेक्निकल लेवल पे देयर आर सम बेनिफिट्स, अदरवाइज एज अ मिलिट्री अलायंस it doesn't have any use. Therefore, Pakistan withdrew in 1979 after determining the organization no longer had a role to play in ensuring its security, especially against India. तो जब पाकिस्तान ने भी देख लिया कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तंजीम का, when it was in dire need of assistance, when there was war with the India, so this organization did not help. It was of no use. As a result, Pakistan left SANTO in 1979. And in that year, also the Iran also withdraw from SANTO because of the Iranian revolution in the same year. तो जब ईरान भी निकल गया, पाकिस्तान भी निकल गया, as a result, many of the important members left the organization, and as a result, SANTO was finally dissolved in 1979. With this, we come to the end of today's